Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So today was first day of IBPS RRB PO examination, and in 4 shifts this examination is now over. Tomorrow again you are having 4 shifts for this exam. Now I am observing these exams since 2012. And almost all the selections that has happened by IBPS since 2012, I have closely monitored the performance of various candidates and likely cutoffs and what can be the scenario. If we look at the long-term scenario, the cutoff every year gives a surprise. There is no correlation with previous year cutoff with any year cutoff, because every time the type of candidates are different, the level of exam is different, and number of vacancies also varies a lot from year to year. Now this year, if we look at the exam, more especially the today exam, very few candidates are able to attempt above 60 questions in today's examination. Very few. More than 3,000 comments are there on our videos relating to your attempts. It may be close to 4,000 also. But if I look at all these comments, the most candidates could not attempt large number of questions. The reason was obvious. The quant paper was tough. Similarly, exam was lengthy, and some candidates were stuck up in certain questions. This has led to low attempts by most candidates. And cutoff is always dependent on performance by most candidates, not by the performance by a few candidates. A few candidates, those who have outperformed others, they are already sailed through. But the question arises is what can be cut off? Cutoff prediction has become impossible these days. And that's why for last 2 years we are not making any cutoff prediction. But one thing is very clear. At this, if your attempts are low, you cannot conclude that you are out of race. This has proven time and again. There are some candidates, those perform less, they lose the hope, they don't prepare for the mains, suddenly result comes and they get the result that they have cleared the exam, and then they have no remedy to recoup the time. So what is the lesson from this? The lesson from this is whatever is my attempt, I will prepare for the next phase. Because no one is capable enough to tell me whether I will clear the exam or not. If you have performed reasonably well, with accuracy, you should hope for sailing through next phase. And that's why you should always prepare for mains. This is my advice. It will not be fair to conclude that this much marks will be there at least for the cutoff. No. These are all guesses. How we know what is the performance of all the candidates? It is just not possible. Even if we are having a sample of 4,000, but whether this performance of 4,000 can determine performance of lakhs of people? No. And that's why always contest is wide open. The prudence and the wisdom says you should do your work, and your work is you should prepare for mains. Don't be upset. Don't feel let down.
Continue to make concerted efforts because surprises do happen. And whatever is your performance, it may be the case that others might have performed similarly or lower than you, and that's why you are in. So, the conclusion of today's exam is, even if you have not able to attempt large number of questions, you have attempted low number of questions, still you are in race. You are not out of race. If somebody tells you, because I have got some messages that my friend is telling you have no chance, who is he to say that? I don't think any person is capable enough of telling you that you are not in race. My own experience says everyone is in race, because these days cutoff prediction has become almost an impossible thing. Sometimes you guess something and it appears to be correct. It may be a chance, but there is no scientific tool which can say with surety that this will be the cutoff. There is no scientific tool like that. All are guesswork, all are based on assumption and presumptions, and sometimes they miss by a large margin. And that's why for last 2 years we have decided not to give any figure. We have to remain hopeful. We should do what we can do, and that is prepare for mains. This is my advice. And looking at today's performance, I can only say the people, those could not attempt large number of questions, those that attempted low number of questions, they have a chance to appear in main examination. And with this positive thought, you should prepare for mains. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। आज IBPS RRB ऑफिसर का 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो गया। इन एग्ज़ाम्स को मैं 2012 से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ और लगभग अब 11 साल हो गए इसको ऑब्ज़र्व करते हुए, और हर साल कुछ न कुछ इसके अंदर यूनिकनेस आती है। कोई भी 2 कट ऑफ्स, अगर हम कोई कहे कि ट्रेंड है, पिछले साल क्या रहा, इस साल क्या रहेगा, कोई लिंक ही नहीं है उसका। हर साल नए सर्कमस्टांसेस हैं, नए कैंडिडेट हैं, नए क्वेश्चंस हैं और नए कट ऑफ हैं। तो पिछले ट्रेंड से हमें कुछ इसमें ज़्यादा कुछ पता लगता नहीं है, मगर इतना ज़रूर पता लगता है कि हर साल जो कट ऑफ होता है वो सरप्राइजेस से भरा हुआ होता है। हर साल जो हम प्रिडिक्शन करते हैं कट ऑफ की, उसके ठीक निकलने की संभावना बहुत कम होती है। और इसीलिए पिछले 2 सालों से इस चैनल पर हम कोई कट ऑफ प्रिडिक्शन नहीं कर रहे, क्योंकि कुछ साल हमने की और वो सही भी निकली, सटीक निकली, पर धीरे धीरे हमें देखने में ये आया कि कोई ऐसी साइंटिफिक थ्योरी है ही नहीं जिसके थ्रू हम इसको अंदाज़ा लगा सकें। क्योंकि जो हम एजम्पशन प्रिजम्पशन के बेस पे बातें कर रहे हैं, उसके सही निकलने या ना निकलने की दोनों ही संभावनाएं हैं। कई बार हमारा अंदाज़ा सही निकल जाता है, लोग वाह वाह करने लगते हैं। कई बार हमारा अंदाज़ा सही नहीं निकलता है। तो सही चीज़ क्या है? सही ये है कि जो भी व्यक्ति इस कंपटीशन में बैठा है और अगर एग्ज़ाम टफ है, अधिकांश लोगों ने ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किए हैं, तो जिन्होंने कम अटैम्प्ट किए हैं वो ज़रूर कंपटीशन में अभी भी खड़े हैं। कई बार कुछ लोग कैजुअल कमेंट कर देते हैं, कुछ मैंने भी कमेंट पढ़े कि सर मेरे दोस्त ने कहा कि तुम्हारा कोई चांस नहीं है। ऐसा दोस्त को कहने का कोई हक ही नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा मॉडल ही नहीं है जिससे कोई सर्टेनिटी से कह सके कि किसका क्लियर होगा, किसका नहीं क्लियर होगा। ये सब अंदाजे हैं, ये सब गैसवर्क हैं। इसलिए अगर आपने फेज़ 1 दिया है, प्री एग्ज़ाम दिया है, तो मेन की तैयारी ज़रूर करें। बहुत बार ऐसा होता है जो लोग हिम्मत हार चुके होते हैं कि मेरा तो होगा नहीं वो एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते हैं, रिज़ल्ट आता है उनका हो जाता है
और जब हो जाता है तो टाइम इतना होता ही नहीं है कि वो मेन की तैयारी कर सकें। तैयारी करने से कुछ नुकसान नहीं होना है। हो गया तो आप मेन में बैठ जाएंगे, नहीं हुआ तो किसी और मेन की तैयारी हो जाएगी। इसलिए मेरा मानना ये है, मेरा जो 12 साल का तजुर्बा है, 11 साल का तजुर्बा इसके अंदर हो गया, 2012 से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ। हर साल नए नए सरप्राइज़ होते हैं। अगर आपकी लो परफॉर्मेंस भी रही है आज, फिर भी आपको मेन की तैयारी करनी चाहिए, अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और ये बातों में नहीं पड़ना चाहिए कि कट ऑफ प्रिडिक्शंस क्या हो रही हैं। जो भी कट ऑफ प्रिडिक्शन होती है, ठीक है, हर आदमी अपने हिसाब से बातें करता है, मगर वो अंदाज़ा है, कोई साइंटिफिक मॉडल नहीं है जिससे किसी ने मेज़र करके बता दिया। अब हमारे पास भी 3000 से 4000 के बीच लगभग कमेंट्स हैं, मगर क्या हम 3-4 हज़ार लोगों के अटैम्प्ट से कई लाख लोगों के क्या अटैम्प्ट है जान सकते हैं? क्या हम उसके बारे में सर्टेनिटी से कह सकते हैं कि यही कट ऑफ आएगा? मेरा मानना है ऐसा संभव नहीं है, और इसीलिए हमेशा हम एक सेफ प्ले करते हैं। और सेफ प्ले क्या है कि मैंने एग्ज़ाम दिया है, मुझे मेंस की तैयारी करनी है, मेरा प्री हो गया तो भी ठीक है, नहीं भी हुआ तो ये मेरी तैयारी किसी न किसी एग्ज़ाम में मेरे काम आएगी। ये सोचते हुए आपको मेन की तैयारी ज़रूर करनी चाहिए, ये मेरी सलाह है। यही मेरा कंक्लूज़न है आज के एग्ज़ाम का। और पॉजिटिव रहिए, हमेशा अच्छा सोचिए। कुछ नहीं पता होता कट ऑफ कितना लो चला जाए, कुछ नहीं पता होता, किसी को नहीं पता होता। तो आशावादी रहें। आपने आज अटेम्प्ट किया है, अगर आपका अच्छा नहीं हुआ, बहुत लोगों का अच्छा नहीं हुआ होगा, बहुत लोगों का आपसे अच्छा भी हो सकता है, आपसे बुरा भी हो सकता है। आप हमेशा कंपटीशन में हैं, ये मान के चलिए। अगर एग्ज़ाम टफ़ था, सबके लिए था, और आज का एग्ज़ाम वाकई टफ़ था। आज का एग्ज़ाम लेंथी था, काफ़ी लोग उलझे हैं उसके अंदर। इसलिए ऐसा मानना कि लोगों ने बहुत अधिक अटैम्प्ट किए हैं, ये सच नहीं है। बहुत कम लोगों के अच्छे अटैम्प्ट हैं, वो तो आगे निकल ही गए हैं, मगर अधिकांश लोगों के कम ही हैं अटैम्प्ट। और अगर आप उनके साथ हैं तो आपका चांस है कि आपको मेन में बैठने का मौका मिले। और इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आपको मेन की तैयारी करनी है। गॉड ब्लेस यू ऑल।